Okay, students. So let's get started with O-level physics, October November 2023, पेपर वन वेरिएंट वन। ये 2023 का पेपर वन वेरिएंट वन है, ओ लेवल फिजिक्स। लेट्स स्टार्ट विद दिस 1 आवर का पेपर। इट्स एन एमसीक्यू बेस्ड पेपर, सो लेट्स स्टार्ट। विच डिस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी? बेटा कौन सी डिस्क्रिप्शन जो है स्केलर क्वांटिटी की है? इट हैज अ डायरेक्शन ओनली? नो। इट हैज अ डायरेक्शन एंड यूनिट ओनली? नहीं, स्केलर क्वांटिटी की तो डायरेक्शन हुआ ही नहीं करती थी। इट हैज अ डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट? नो। इट हैज अ मैग्नीट्यूड एंड यूनिट ओनली? डी इज योर आंसर। स्केलर क्वांटिटी में हमेशा आपके पास मैग्नीट्यूड और यूनिट ही हुआ करते थे। The diagram shows a distance time graph for a car traveling in a straight line. Okay, so this is the distance time graph for a car traveling in a straight line. In which region is the car decelerating? किस region में velocity कम हो रही है बेटा? So let's analyze this graph. This is a distance time graph. Do you remember that the gradient of distance time graph is equals to what? Velocity. Gradient of distance time graph किसके equal होता है? Velocity के equal होता है. Now ऐसा इस ग्राफ में कौन सा रीजन है जहां पे आपका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज इफ योर ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग ऑन दिस ग्राफ, दैट मींस योर वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग, दैट मींस यू विल बी डिसेलेरेटिंग। बेटा इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कौन सा ऐसा रीजन है जहां पे आपका ग्रेडियंट डिक्रीज हो रहा है? बिकॉज द रीजन वेयर योर ग्रेडियंट इज डिक्रीजिंग, योर वेलोसिटी विल डिक्रीज, यू विल बी डिसेलेरेटिंग। इफ यू एनालाइज ऑप्शन सी, दिस इज व्हाट? दिस इज अ डिक्रीजिंग कर्व। ये क्या है बेटे? डिक्रीजिंग कर्व। डिक्रीजिंग कर्व में क्या होता है? योर ग्रेडियंट decreases. As your gradient is decreasing, your velocity might be decreasing. That means you are decelerating. C is your answer. Simple. आगे बढ़ते क्वेश्चन थ्री की तरफ। लेट्स जूम इन अ बिट। A wooden block is pushed along a table at constant speed. Constant speed का क्या मतलब होता है बेटा? Forward forces is equal to the backward forces. Constant speed का क्या मतलब होता है? Forward forces is equal to the backward forces. Which statement is correct? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? नाउ देखो, आपकी पुशिंग फोर्स कहाँ लग रही है? फॉरवर्ड। दिस इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मतलब फॉरवर्ड फोर्सेस बैकवर्ड फोर्सेस के इक्वल होनी चाहिए बेटा। तो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? द फ्रिक्शनल फोर्स इंक्रीजेस? नो। द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द पुशिंग फोर्स। ये हो सकता है, ये हो सकता है कि फ्रिक्शनल फोर्स आपको पीछे की तरफ बैकवर्ड धक्का लगा रही हो, and it has the same magnitude as the pushing force. Why the same magnitude? Because at constant speed your forward forces is equals to the backward forces. थ्री का आंसर भी हो जाएगा। Let's move on to question four. A car begins to move, it speeds up, मतलब it is performing acceleration until it reaches a constant speed. Okay, so initially आपकी कार रेस्ट पे थी, now it has reached a constant speed. ठीक है, let's say a constant speed of 10. Perfect, just an imaginary number. इनिशियली आपकी कार जीरो पे थी, अब एक कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 पे आ गई है। योर एक्सेलरेशन इज आल्सो हैपनिंग। व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन एंड व्हाट हैपेंस टू द वेलोसिटी ऑफ द कार? कैन यू रियलाइज वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रही है? ए इज योर आंसर। Okay, let's see this. The diagram shows how the length of a spring changes when a 10 Newton force is suspended from it. ठीक है, let's see. बेटा जब आपने स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं लगाई हुई, 0 न्यूटन की फोर्स है, द लेंथ इज 5 सेंटीमीटर। When you apply a force of 10 Newton, your length goes to 8 सेंटीमीटर। एक्सटेंशन कितनी हो गई? 8 माइनस 5, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो जब आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है बेटा, तो आपकी एक्सटेंशन कितनी है? 3 सेंटीमीटर। द 10 न्यूटन लोड इज रिप्लेस बाय अ 20 न्यूटन लोड। अच्छा जी, ये 10 न्यूटन लोड हटा के हमने 20 न्यूटन लोड लगा दिए। यू हैव टू कैलकुलेट द न्यू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। देखो, जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग होती है वो दो चीजों का कंपोनेंट होती है, एल नॉट प्लस एक्सटेंशन। बेटा कभी भी आपने लेंथ ऑफ द स्प्रिंग स्टेट करनी है, आपने दो कंपोनेंट्स को ऐड करके बताना। एल नॉट प्लस एक्सटेंशन। एल नॉट क्या होती है? अनस्ट्रेच्ड लेंथ। अनस्ट्रेच्ड लेंथ क्या होती है? द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग व्हेन नो फोर्स इज अप्लाइड। एल नॉट यहाँ पे क्या है?
5 सेंटीमीटर। ठीक है। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग में नो फोर्सेस अप्लाइड, एल नॉट यहाँ पे क्या है बेटे, 5 सेंटीमीटर। सिंपल। कैन यू कैलकुलेट द एक्सटेंशन? यप। अगर फोर्स 10 न्यूटन थी तो एक्सटेंशन 3 सेंटीमीटर थी। 20 न्यूटन पे एक्सटेंशन कितनी हो जाएगी? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू 3 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। 10 को डिवाइड कर दो, 20 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू योर एक्सटेंशन 1 to 6 सेंटीमीटर इज इक्वल टू योर न्यू एक्सटेंशन। तो जब आपने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई, आपकी एक्सटेंशन कितनी हो गई? 6। Unstretched length है 5 सेंटीमीटर। Can you calculate the total length? Yes, 5 plus 6 that is equals to 11 सेंटीमीटर। B is your answer. Simple. आगे बढ़ते हैं। A force F causes a moment about point 2 on an L shape bar। ठीक है, फोर्स F की वजह से मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है about point 2। The force F acts at point P. Okay. What is the moment of force F about point 2? अच्छा जी, आपने मोमेंट ऑफ फोर्स एफ निकालना है अबाउट पॉइंट टू। हाउ विल यू डू दैट? हमेशा याद रखो, वेन एवर यू हैव अ डायगोनल फोर्स, कैन यू रियलाइज दिस फोर्स एफ इज अ डायगोनल फोर्स? Whenever you have to calculate the moment due to this diagonal force, you will take this diagonal force and you will mark the perpendicular distance between the pivot and the force. बेटा पिवट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री वाला डिस्टेंस मार्क करोगे, दैट विल बी योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस एफ इंटू डी फोर। योर मोमेंट कम आउट टू बी व्हाट? एफ डी फोर। मोमेंट क्या आ गया भाई? एफ डी फोर। कौन सा आंसर है? डी इज योर आंसर। लेट्स फर्दर मूव अहेड। अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? वेट एक्ट्स इन मिडिल। ठीक है। A meter rule of weight W is pivoted at 25 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, हमने यहाँ पे पिवट लगाया हुआ है at 25 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, and held horizontal by a force F applied at the 100 सेंटीमीटर मार्क। Okay. The rule is supported by a vertical force acting at the pivot. What is the magnitude of P? You have to calculate the magnitude of P in terms of W. तो first of all तो हम करते हैं take moments about point P. Let's take moments about P। ठीक है, मोमेंट्स अबाउट पी लेते हैं। लेट्स टेक मोमेंट्स अबाउट पी। कैन यू रियलाइज दिस वेट फोर्स विल कॉज द मीटर रूल टू टर्न इन विच डायरेक्शन? इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये क्लॉकवाइज मोमेंट किस तरह निकालोगे? फोर्स दैट इज डब्ल्यू इनटू द डिस्टेंस दैट इज व्हाट? 25 से 50 जा रहे हो, 25 सेंटीमीटर। योर क्लॉकवाइज मोमेंट बिकम्स 25W। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट किस तरह निकालोगे? This force W is causing anti-clockwise moment, force F, into the distance from 25 to 100, that is 75. F into 75 is equals to 75. F is your anti-clockwise moment. Now, क्या कहोगे आप? Clockwise moment is equals to anti-clockwise moment. Clockwise क्या है बेटा? 25W. Anti-clockwise क्या है? 75F. This becomes 1, this becomes 3. 1 over 3W is equals to your F. Okay, 1 over 3W is equals to your F. Perfect. ये क्या आ गया? आपकी F की फोर्स आ गई इन टर्म्स ऑफ W। नाउ अब क्या करोगे बेटा? यू विल से द अपवर्ड फोर्सेस आर इक्वल टू द डाउनवर्ड फोर्सेस। अप डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है? फोर्स P and force F. What is the force in the downward direction? Weight. So P plus F is equals to the downward force of weight. F क्या है? 1 over 3W. P की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? W minus W over 3. P comes out to be 2W over 3. Any answers like that? C is your answer. The diagram shows a stationary fairground ride with 4 chairs of equal mass. Which chair has the most gravitational potential energy? सबसे ज्यादा gravitational potential energy किसकी होगी? Gravitation potential energy is equals to mgh.
To have the maximum gravitational potential energy, you must have the maximum height. किसकी maximum height है? Point A की. A is your answer. Hydroelectric and tidal power stations generate electrical energy. Do these use renewable sources of energy? इसमें से renewable sources कौन सी हैं बेटा? Hydroelectric भी renewable है, tidal भी renewable है. Let's further move ahead. Which energy source is correctly described? Biofuels, renewable है, yes. It is available at all times, yes. A is your correct answer. Biofuels जो हैं वो renewable भी होते हैं. They are also available at all times. Okay. A small motor has an input power of this and is switched on for 5 minutes. ये आपका time आ गया. What is the electrical energy input? Energy input कैसे निकालते हैं? Power input into time. बेटा पावर क्या है? 10. टाइम क्या है? 5 मिनट्स. 5 into 60. बताओ क्या आंसर आ जाएगा एनर्जी इनपुट का? What will your answer of energy input comes out to be? 3000 joules. D is your answer. 3000 joules एनर्जी इनपुट का आंसर आ गया. अच्छा आगे बढ़ते हैं. Two liquids X and Y are poured into beakers of different sizes. Liquid X has a density of what? 1000. Okay. Liquid Y has a density of what? 900. On the base, which beaker has the greatest pressure? बेटा लिक्विड की वजह से जो प्रेशर होता था उसका फॉर्मूला आपको याद है? रो जी एच. इफ यू वांट द मैक्सिमम प्रेशर, योर डेंसिटी मस्ट आल्सो बी मैक्सिमम, योर हाइट मस्ट आल्सो बी मैक्सिमम. ऑप्शन ए और बी को हम कैंसिल कर देंगे बिकॉज दे हैव लेस हाइट्स. नाउ फ्रॉम ऑप्शन सी एंड डी, which liquid has a greater density? Liquid X. देखो liquid X की दो अच्छी बातें. It has the highest or the maximum density and it has the maximum height as well. That's why the pressure of C is maximum. C का pressure क्या है? Maximum. C will be your answer to 12. Simple. आगे बढ़ते हैं बच्चों. A swimmer is at the bottom of the pool. The density of the pool is this, and the gravitational field strength is this. Which expression gives the pressure exerted on the swimmer due to water? Pressure का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? Pressure is equals to rho g h. क्या आपको डेंसिटी गिवन है? यप 1000. क्या आपको ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है? यस 9.8. क्या आपको हाइट गिवन है? यस 5. दिस कम्स आउट टू बी व्हाट? बी इज योर आंसर. सिंपल. अब आ गया जो. Some gas is trapped in a large syringe. Okay. The atmospheric pressure is 100 kilopascals. ठीक है. The gas pressure is 20 kilopascal above atmospheric pressure. अच्छा जी. तो बेटा यहाँ पे अभी एग्जामिनर क्या कहना चाह रहा है? The atmospheric pressure is 100 kilopascal. The gas pressure is above 200 kilopascals above atmospheric pressure. तो आपका इनिशियल प्रेशर या P1 क्या हो जाएगा? 100 kilopascal plus 200 kilopascal, that is 300 kilopascal. This is your initial pressure. Let's say your initial volume is V1. The piston moves outside and the volume of the trapped gas doubles. चलो, let's say आपका जो फाइनल वॉल्यूम है V2, that is equals to 2 times V1. आपका वॉल्यूम डबल हो गया. Temperature remains constant. What is the new gas pressure? You have to calculate P2. कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे बेटा? You will say P1 V1 is equals to P2 V2. प्रेशर P1 क्या है? 300 किलो पास्कल. वॉल्यूम V1 क्या है? P2 आपके पास फाइनल प्रेशर आ गया. V2 क्या आ जाएगा? 2 V1. V1 V1 कैंसिल आउट. 300 डिवाइडेड बाई 2, प्रेशर 2 क्या हो जाएगा या फाइनल प्रेशर क्या हो जाएगा? 150 किलो पास्कल्स. बी योर आंसर. Let's further move ahead. Which row describes what is happening at x, y and z? X पे क्या हो रहा है बेटा? Can you realize as you are increasing the temperature at x, you are going from solid to liquid? Solid to liquid को जाने को क्या कहते हैं हम? Melting. There is only one option which has x marked as melting. 15 का answer is D. I don't need to study further. आगे पढ़ते हैं भाई. A student on a camping expedition cools a sealed water of water which is at the same temperature as the surrounding air. अच्छा जी, आपने कूलिंग करवानी. हमेशा कूलिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है? एवेपोरेशन. ओके.
Which method cools the water at the greatest rate? So you have to see के evaporation का rate कैसे greatest कर सकते हो. Wrap the bottle in aluminum foil? No. Wrap the bottle in dry white paper? No. Wrap the bottle in foam? No. Wrap the bottle in wet paper? Put it in a breeze. This will cause your rate of evaporation to increase. जैसे जैसे evaporation होगी आपकी बॉटल जो है वो कूल हो जाएगी. 17 पे आ जाओ बेटा. A student suggests three factors that affect the rate of emission of thermal energy by radiation from a hot object. These are the surface temperature of the object, the surface area of the object, the surface color of the object. बेटा देखो स्टूडेंट क्या कह रहा है. स्टूडेंट सजेस्ट कर रहा है three factors that affect what? Rate of thermal energy. Three factors that affect the rate of emission of thermal energy from a hot object. Surface temperature, yes, it does affect the rate of emission. जितना ज़्यादा surface temperature होगा उतनी radiation ज़्यादा होंगी. Surface area, yes, जितना ज़्यादा object का surface area होगा उतनी rate of emission ज़्यादा होगी. Surface color, yes, black surfaces emit a larger amount of radiation. White surfaces emit a lower amount of radiation. A is your answer. Simple. आगे बढ़ते हैं. A plane mirror is on a vertical wall, forms an image of an object placed in front of it. Which characteristics describe the image? अच्छा जी, image की characteristic from a plane image कौन describe करेगा? Real and inverted? No. हमेशा याद रखो plane mirror से जो भी image form होती है that is virtual and upright. D is your answer. Let's further move ahead. The diagram shows light traveling in air incident on the surface of a glass block. अच्छा जी, light air में travel कर रही है. This is incident on the surface of the glass block. Some light is reflected and some light is refracted. अच्छा जी, कुछ light को हम reflect कर रहे हैं, कुछ light को refract कर रहे हैं. Which diagram shows the reflection and refraction of light? अच्छा जी, कौन सी diagram reflection show कर रही है, कौन सी diagram refraction show कर रही है? Now reflection except A, all of them are showing reflection. I hit key reflect हुई, I hit key reflect हुई, I hit key reflect हुई. Now, which diagram is showing the correct refraction as well? Can you realize air is a less dense liquid? Glass is a more dense liquid. When you go from less dense material to a more dense material, light क्या करती है? Light bends towards the normal. ये क्या है? Normal. लाइट जो है नॉर्मल के करीब हो जाती है. डी इज योर आंसर. ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट. Which statement is correct? Total internal reflection only occurs when light is traveling from air to glass. No. Total internal reflection की क्या condition थी? You must go from a more dense material to a less dense material. This is not the case in option A. ऑप्शन ए में क्या हो रहा है? आप एयर से ग्लास में जा रहे हो, लेस डेंस से मोर डेंस जा रहे हो. नॉट एन ऑप्शन. द लार्जर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? नो. When total internal reflection occurs, the angle of incidence is equal to the angle of reflection. Yes, C is your answer. आगे बढ़ते हैं. You have to calculate magnification. Magnification किस तरह निकालते थे? Height of image divided by what? Height of object. ठीक है बेटा, मैग्निफिकेशन किस तरह निकालते थे शरा दो? हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. अच्छा जी, इमेज की हाइट में कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5. ये 5 10 हो गए. एंड 1 2 3 4 5. इमेज की हाइट में कितने बॉक्स हो गए? 15. ऑब्जेक्ट की हाइट में कितने बॉक्सेस हैं? ये 5 है. एंड देन यू हैव 2.5. तो ऑब्जेक्ट की हाइट में कितने बॉक्सेस हैं? 7.5. योर मैग्निफिकेशन कम्स आउट टू बी 2. बेटा मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमेशा आप क्या करते हो? हाइट ऑफ द इमेज देखते हो डिवाइडेड बाय द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे अगर आप देखो तो जो इमेज है वो कितने स्मॉल बॉक्सेस कवर कर रही है? 15. जो ऑब्जेक्ट है वो कितने स्मॉल बॉक्सेस कवर कर रहा है? 7.5. डिवाइड कर दो. 2 comes out to be your answer. C is your answer. Which range of sound frequencies include only frequencies of sound that can be heard by healthy human ear?
अच्छा, कौन सी फ्रीक्वेंसी सिर्फ एक हेल्दी ह्यूमन एयर को जो है वो लिसन आउट होती है? देखो, हेल्दी ह्यूमन एयर जो है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। कौन सी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसके बीच में लाई करती है? नॉट ए, नॉट बी। सी में 50 हर्ट्ज इज ग्रेटर देन 20 हर्ट्ज, दिस इज ऑडिबल। 5,000 हर्ट्ज इज लेस देन 20,000 हर्ट्ज, या दिस इज ऑल्सो ऑडिबल। सी इज योर आंसर। An aircraft flying through the air becomes electrically charged. What caused this to happen? The friction between the aircraft and the air. B is your answer. The friction between the aircraft and the air causes the aircraft to get electrically charged. Okay. Two metal spheres are brought close to each other. The two spheres repel each other. Beta, repel कब करोगे? When you have like charges. Perfect. Which statement explains this? Both spheres are charged and both are positive. That means both are like charges. If you have like charges, you will repel each other. Is your answer. अब 25 पे आ जाओ. A student sets up the circuit shown. The lamp does not light. Lamp क्यों नहीं light करेगा? Can you realize the positive terminal of the battery is connected to the negative terminal of this diode? बेटा, डायोड में हमेशा जो ये लाइन होती है, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, ट्रायंगल इज द पॉजिटिव टर्मिनल. एंड अगर डायोड का नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है, दिस इज विच कंडीशन? रिवर्स बायस्ड कंडीशन. और रिवर्स बायस कंडीशन में करंट नहीं फ्लो करता या करंट जीरो हो जाता है. व्हाट मेक्स द लैम्प लाइट? ऐसा क्या करें कि लैम्प लाइट अप कर जाए? चेंजिंग द बैटरी सप्लाई? नो. इंसर्टिंग अ फ्यूज? नो. रिवर्सिंग द बैटरी कनेक्शन इज अ गुड ऑप्शन. Reversing the battery connections is actually a good option. Why? क्योंकि अगर आप बैटरी कनेक्शंस को रिवर्स करते हो, इफ यू रियलाइज, अगर बैटरी कनेक्शंस को रिवर्स करते हो, नेगेटिव यहाँ पे ले आते हो, पॉजिटिव यहाँ पे ले आते हो, कैन यू रियलाइज नाउ द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड. Let's reverse this as well. The positive terminal is connected to the positive terminal of the diode. The diode will now be in a forward bias condition and it will allow the current to flow. C is your answer. Circuits P and Q each contain two identical resistor. अच्छा जी, आर आर, ठीक है, हर में आर आर का ही रजिस्टर है. What is the resistance of circuit P and what is the resistance of circuit Q? Circuit P की total resistance क्या हो जाएगी? R plus R, that is 2R. Circuit Q की total resistance क्या हो जाएगी? 1 over RT is equals to 1 over R plus 1 over R. RT क्या हो जाएगी? R over 2. तो Q की रेजिस्टेंस क्या हो गई? R over 2. P की रेजिस्टेंस क्या हो गई? 2R. C is your answer. Let's further move ahead. The current in an electrical motor is 2 ampere. Okay. It transfers 20 joules of energy in 5 seconds. What is the potential difference? Voltage is equals to work done over charge. चलिए, वर्क डन क्या है? 20 जूल्स. चार्ज की जगह आप क्या लिख सकते हो? करंट इनटू टाइम. ओके. 20 डिवाइडेड बाय करंट क्या है? 2 इनटू टाइम क्या है? टाइम है 5 सेकेंड्स. क्या आंसर आ जाएगा? द आंसर ऑफ वोल्टेज कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट्स. 27 का आंसर इज बी. इजी पीजी. चलो जी, आगे बढ़ते हैं. थ्री स्टूडेंट मेक्स कमेंट अबाउट द अप्लायंस विद डबल इंसुलेशन. अच्छा जी, तीन स्टूडेंट्स हैं जो कमेंट करते हैं अबाउट द अप्लायंस विद डबल इंसुलेशन. Appliance with double insulation do not require an earth wire. Yeah, that's correct. Double insulation protects the user from an electric shock. Yeah, that's correct. The circuit of double insulation do not contain a fuse. That's not correct. P and Q are only correct. ऐसा कोई option है? B is your answer. Okay, let's read out question 29. A magnet moves at constant speed through a coil of wire. The coil is connected to an oscilloscope, that is a CRO. The diagram shows how the trace is produced on the screen. ठीक है, ये trace produce हुई है on the screen. The experiment is changed and now a new trace is produced. अच्छा जी, experiment हमने change किया और एक new trace produce हुई. Can you realize पहले you had this bottom पे wave. Oh, what is this? Can you realize in the initial experiment you had a wave that was going into the negative axis first of all. Now your wave is becoming positive. हाँ जी, वेव की जो
वोल्टेज की डायरेक्शन है वो फ्लिप हो गई है। पहले अगर नेगेटिव थी तो आप क्या है, पॉजिटिव है। बेटा देखो, पहले अगर आपका ऑसिलोस्कोप नेगेटिव वोल्टेज डिटेक्ट कर रहा था तो अब वो पॉजिटिव वोल्टेज डिटेक्ट कर रहा है इनिशियली। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? कि आपका अदर पोल ऑफ द मैग्नेट जो है वो एंटर कर रहा होगा कॉइल फर्स्ट, बी एंड डी विल गेट कैंसल्ड आउट। ऑल्सो इफ यू रियलाइज बेटा, पहले आपकी वेव कितने बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही थी? 1 और 2। पहले आपकी वेव कितने बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही थी? 1 और 2। अब आपकी वेव कितने बॉक्सेस में कंप्लीट हो रही है? 3 बॉक्सेस में। दैट मीन्स योर कॉइल हैज बिकम लॉन्गर एज वेल। A is your answer. The coil has become longer and the other pole of the magnet enters the coil first. 29 का answer is A. Let's further move ahead. A bar magnet is dropped through a vertical solenoid that is connected to a sensitive ammeter. Okay. A current is induced in the solenoid and the solenoid becomes an electromagnet. अच्छा जी, solenoid में current induce हो रहा है. Okay. What else do we have? Which row describes the polarity at end y? Okay, आपने end y पे polarity निकालनी है, and the force between the solenoid and the bar magnet when the bar magnet leave the solenoid. अच्छा जी, मैं यहाँ पे solenoid बना देता हूँ. Let's say this is your solenoid and let's say this is end y और इससे बार मैग्नेट बाहर मूव कर रहा है. दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ. बेटा कैन यू रियलाइज द बार मैग्नेट इज मूविंग डाउनवर्ड? According to Lenz's law, the solenoid will oppose this motion. It will try to move it upward. बेटा बार मैग्नेट को आप अपवर्ड कैसे मूव करा सकते हो? If this end y becomes what? नॉर्थ पोल. अगर एंड y नॉर्थ पोल बन जाएगा तो नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करेंगे. दिस solenoid will try to move the bar magnet upward. This is according to Lenz's law. तो पोल क्या हो जाएगा? नॉर्थ. फोर्स क्या हो जाएगी? अट्रैक्टिव. A is your answer. Let's further move ahead. Which diagram shows the output voltage for a simple AC generator? हमेशा याद रखो, AC जनरेटर में आपका जो भी वोल्टेज होगा वो साइनोसाइडल वेव होगी और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा. दिस कैन नॉट बी योर आंसर, दिस कैन नॉट बी योर आंसर, दिस कैन नॉट बी योर आंसर. Why is A not your answer? क्योंकि आपका वोल्टेज सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में है. दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर एन एसी जनरेटर. एसी जनरेटर में आपका वोल्टेज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है. एंड यू हैव अ कर्व्ड वेव लाइक दिस. इस तरह की वेव होती है. ठीक है. Let's further move ahead. A charger for a mobile phone uses a transformer which steps the voltage down from this to this. This is your primary voltage. This is your secondary voltage. The primary coil in the transformer has these turns. You have to calculate how many turns are on the secondary coil. How will you do that? Vp over Vs is equals to Np over Ns. Voltage primary क्या है बेटा? 230. Voltage secondary क्या है? 5. Number of turns on the primary coil क्या है? 2500. Number of turns on the secondary coil क्या है? हमें निकालने. Let's calculate that. 230 divided by 5. Okay, 2500. The answer comes out to be roughly 54. Number of turns on the secondary coil is equals to 54. B is your answer for 32. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Let's further move ahead. Let's see this. A commutator is connected to the coil of a DC motor. The commutator rotates and connects the coil to a power supply. Once every half turn, the current in the coil reverses. Okay. What is the name of the commutator and what is the orientation of the plane of the coil as the current reverses? अच्छा जी, name of commutator क्या है? Split ring. A और B cancel out. What is the orientation of the coil? हमेशा याद रखो करंट कब रिवर्स होता है? When the coil is in the vertical direction, that means perpendicular to the magnetic field. D is your answer. Let's further move ahead. अच्छा जी. A girl makes a simple transformer to illuminate a low voltage lamp. Okay. The transformer is shown. What is the material of the rod? हमेशा याद रखो ट्रांसफॉर्मर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है? आयरन. ए एंड बी कैंसिल आउट. एंड ट्रांसफार्मर में हमेशा एसी सप्लाई यूज होती है. डी इज योर आंसर.
Which particles are in the nucleus of a large atom? हमेशा याद रख लो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ही होते हैं, नो अदर एटम्स। 36 पे आ जाओ। Which particles have weaker ionization effect? कौन से पार्टिकल के पास weaker ionization effect होते हैं? बीटा, ए एंड बी कैंसिल आउट। Which particles have weaker penetration power? Alpha, C is your answer. Perfect. A beam of beta particles passes into an electric field, okay, and into a magnetic field. What, which number show the path of the beam through the field? अच्छा जी, हमने बीटा पार्टिकल्स का पाथ बताना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड में पाथ बताना है तो बहुत इजी है। If you are emitting a negative charge या beta particle into the electric field, it will get attracted towards the positive plate। ऐसा एक ही ऑप्शन है, 6 वाला। ठीक है, तो ऑप्शन ए और सी तो कैंसिल हो जाएंगे। Now we have to see how will the beta particle get deflected in a magnetic field. So you will apply what? कौन सा लॉ अप्लाई करोगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। विच लॉ विल यू अप्लाई? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आप क्या कहोगे? मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फर्स्ट फिंगर नॉर्थ टू साउथ। योर बीटा पार्टिकल्स आर गोइंग इनटू द पेज। बेटा बीटा पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स होते हैं? नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं ना। बीटा पार्टिकल्स आर गोइंग इनटू द पेज, तो करंट क्या करेगा? आउट ऑफ द पेज आ जाएगा इस तरह। Why? Because the current की direction is always opposite to the direction of negative charges. आपका थंब कहाँ पॉइंट करेगा? Where will your force point? Downward like this. Option C. D is your answer. ठीक है, जब हमने देखना था कि बीटा पार्टिकल्स मैग्नेटिक फील्ड में किस तरह ट्रैवल करेंगे या किस तरह डिफ्लेक्ट होंगे, विच लॉ डिड बी अप्लाइड? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ। करंट कहाँ आएगा? आउट ऑफ द पेज आ जाएगा। व्हाई? बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ करंट, यू कैन राइट इट हियर, डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हाट? डायरेक्शन ऑफ करंट इज व्हाट? ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ नेगेटिव चार्जेस या फिर बीटा पार्टिकल। सिंपल, इजी। आगे बढ़ते 38 पे आते हैं बेटा। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 38। अच्छा जी, द आइसोटोप रेडॉन 222 has a half life of 3.8 days, okay? Which statement about the sample containing 1 milligram of radon 222 is correct? देखो इनिशियली आपके पास 1 मिलीग्राम है, आफ्टर 3.8 डेज क्या हो जाएगा? 0.5 मिलीग्राम रह जाएगा ऑफ रेडॉन। तो एनी आंसर लाइक दैट? आफ्टर 3.8 days there is 0.5 milligram of radon left, B is your answer. What is the first stage in the life cycle of a star? First stage in the life cycle of a star क्या होता है? A cloud of gas and dust comes close together and they start hitting each other. What is the definition of a redshift? An increase in the observed wavelength of light. Redshift हमेशा क्या होती है? Wavelength का increase होती है from distant galaxies as the galaxies are moving away from it. So yeah, that's it for this paper. If you have any questions, you can ask in the comments below.